Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. See, Shamita and me both were actually not playing the game, honestly speaking. We were playing the game, but we are not playing the game by not being real, probably. Sometimes you need to be a ruthless person to probably win a show. मुझे लगता है कि वो गलत है और मैं गलत लोगों को चाहे वो मेरा फ्रेंड हो मैं सपोर्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली मुझे लगा था दिव्या कहीं कहीं रॉन्ग जा रही है वो गेम खेल रही है और मेरे हिसाब से वो गलत था. Hello guys, today we have Rakesh Bapat with us and we'll be talking about his Big Boss OTT journey. Hello, welcome to India Forum. Welcome, thank you for having me. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, how was your Big Boss OTT journey? Was it over the top? It was over and under many times. It was fun. It was a learning experience. It was something that I didn't ever feel that I would be on a platform like this because of so much of chaos. And I'm a very calm person, so finding that calmness in the chaos was really a huge thing for me. And eventually, I'm happy that I was successful in finding the chaos, the calm in the chaos. And also, आपको हमेशा बोलते हुए सुना है कि 2 से ज्यादा लोग आपके लिए भीड़ हो जाते हैं. 13 कंटेस्टेंट के साथ घर में रहे हैं और आप फिनाले तक थे. पूरे टाइम, पूरे सीजन आप घर के अंदर थे. तो वो जो एक अनकंफर्टेबल जो एक जोन था, क्या उससे बाहर आप आए हो? हाँ, बिल्कुल आया. Because अभी I'm sitting alone at house and I'm feeling like shit, I need to be with people. वो थोड़ा change हो चुका है. And I'm liking that change. In fact, I'm more of a outgoing person. I feel a little bit now. I don't fear crowd anymore. Yes, I'm not saying it's a drastic change. Yes, it is. थोड़ा बहुत eventually बहुत सारी चीजें change होने वाली है. And I'm liking the change somewhere. I mean, I never thought that I would like this. I thought post Big Boss I would be a complete wreck. But I think I'm much evolved right now. राकेश, अगर आपको ऑफर हो बिग बॉस 15 तो आप क्या करोगे? Will you do that show? I'm still thinking, honestly speaking, and you would know soon. There are a lot of other commitments that are there in front of me, and let's see what happens. Actually, ओके, इस बिग बॉस ओटीटी में हम आपको हमेशा एक दुविधा में देखते थे, शमिता और दिव्या के बीच में. हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टास्क आपके सामने रख दिए जाते थे, ऐसे हर्डल्स रख दिए जाते थे जो आपके लिए काफी टफ हो जाता था कि किसको चूज करूं. तो राकेश, वहां पे ऐसा हमेशा क्यों होता था कि दिव्या दोस्त है, वो समझ जाएगी, शमिता को आप हमेशा फेवर करते थे? व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू ऑलवेज थॉट कि दिव्या समझ जाएगी बट शमिता नहीं समझेगी? see, when you have feelings for somebody. When you are that feeling has started, catapulting. You do care for a person who you are connected with more, and you do try to understand the person better and be with the person in a lot of ways. So there's a lot of difference between probably a friend and a person you are connected to in a certain way. And it is normal to a situation like that has happened in real life many times. Yes, things on that aspect are a little delicate. You have to handle with care. You have to give the other person that space or that extra concern because there are little more feelings involved there. So you have to be careful about how things are going to go forward. And I wanted to understand Shamita better because she is an extremely nice person. She was misunderstood on the show. And I wanted to be there for her through her time of turmoil or any kind of anxiety probably that she was going through. We all go through that phase. And as a partner, as a friend, as somebody who really likes her, I wanted to stand by her and I wanted to support her in each of her way possible. Divya, yes, I mean, obviously she's a friend, she would understand that, yes, I told her also on the show that girl is important, Shamita is important to me, and I want you to understand her also. So, probably I could tell that to a friend to see my side and merge into the situation. And with Shamita, it was
it was a different equation. I wanted to know her better, and I wanted to give her the benefit of doubt. And also, the show was too, it took a toll on everyone. So to deal with feelings like these in such shows is very difficult, and you need to understand. You need to deal with it delicately and with a lot of understanding and support. So yes, I mean yes, there was a difference between my ways of dealing with Shamita and Divya both, which I feel was very natural, which happens in real life also. एंड ऑल्सो देयर वाज अ टाइम जब हर कोई आकर आपको एक ही चीज बोल रहा था कि शमिता इज मोर एक्सप्रेसिव, वो अपनी फीलिंग्स बहुत खुलकर सामने रख रही है, पर राकेश आपसे वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप बार बार एक ही चीज बोलते थे कि मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, इतना मतलब वी कैन सी कि अब आपका हो चुका है, यहाँ तक आप भर चुके हो कि बस करो, स्टॉप आस्किंग मी दिस। मैंने 2-3 बार क्लियर कर दिया कि मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, और ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट मन में फीलिंग्स ऑलमोस्ट इक्वली होती है। घर के बाहर आपने शमिता को ये भी बोला था कि जब मैं बाहर आऊंगा आप मेरी अदर साइड देखोगे, तो क्या आप लोग मिले, आपकी बात हुई, क्या शमिता ने वो अदर साइड देखा आपका? It's too short time right now to understand each other. अभी शो खत्म हुआ है, हम जरूर मिले, बातें भी होती है. We would like to spend more time together, and soon we would, and you would know about it. Yeah, that's why I'm waiting for us to know each other even further. I mean, and hoping that things are different outside. Mhm. And how does it feel when third person, come in and keep, poking ki you're not that expressive, she's expressing so much, just understand from where she's coming and all. जब ये सब बातें आपको बोली जाती है, तो what was your mindset that time? Because we saw you were very upset जब देवलीना और रश्मि आए थे उस पूरे segment के बाद, you were little upset. So what was going in your mind that time? The thing which was going, see, every time you have to make a decision, it's not something which I always do in my life. I mean, decisions like these, like we have bigger issues in life, we have things which are more important. Now, Big Boss में कैसे होता है कि sometimes you fight over petty issues which are not even real issues, और उस पे तुम decide करो, उस पे तुम judgments pass करो मुझ पर, या तुम्हें क्या लगता है कौन स्टाइलिश है, कौन हॉट है, कौन ये है, कौन वो है. जनरल लाइफ में मैं ऐसे कभी ओपिनियन देता नहीं हूँ किसी को, और बिकॉज एवरीबडी आई थिंक इज हॉट इन देयर ओन वेज, एवरीबडी इज फनी इन देयर ओन वेज, a lot of things, lot of attributes that people have, everybody has got their own USP, and I'm nobody to sit and judge anybody out here, and because I'm also flawed, I'm not perfect, so how am I in a place to judge anybody, so that was somewhere, it was eating my head, eating my soul, because you just are forced to give a judgment when you actually don't have a judgment, and you are actually pushing me to do that, which I'm not comfortable with. So obviously it is not a good situation to be in, and I was pretty upset then, because no matter how many times I told them, yeah, I don't want to do this, because I'm a very neutral person anyway in life in general. So and when I know I'm not perfect, why should I give them? So it was just like whatever I was saying or doing wasn't coming from my heart, like to किसी का मूड उबाना है पानी में, किसी को ये करना है, किसी को पनिश करना है, किसी को दंड देना है, ये ऑनेस्टली मैं रियल लाइफ में कभी करता नहीं हूँ, और ये मुझसे करवाया गया, तो मुझे थोड़ा सा, पर ये गेम शो है, मुझे पता है, और मैं स्टैंड अप फॉर इट, but I'm not complaining or whatever, but yes, I mean somewhere I maybe I didn't play it well, I don't have the heart to hurt anyone as such. So वो मेरे लिए और वो दिखाई भी दिया लोगों को कि भाई ये थोड़ा इंडिसिसिव है या कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहा, पर मैं स्टैंड ये चीजों में ऑनेस्टली नहीं लेता हूँ लाइफ में, बिकॉज मैं खुद कोई सिचुएशन में कुछ भगवान नहीं हूँ कि मैं किसी को जजमेंट या कुछ ओपिनियन दूँ अपना. So everybody makes mistake, everybody is imperfect, and nobody has a right to judge anybody, I feel. So that made me feel bad. या निशान भी यही बोलते थे, राकेश आपको गेम समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ स्टैंड. सो फिनाले वाले दिन निशान को जब बोला गया आप 3 लोगों को सॉरी अगर बोलना चाहोगे तो कौन होगी, उन्होंने आपको चूज किया. जो आप बात बोलते थे उन्होंने फिनाले में रियलाइज की, जो काफी लेट हो चुका था, कि उन्हें शायद आपके साथ खेलना चाहिए था. इतनी पुरानी दोस्ती को इस घर में बहुत अच्छी सी यूटिलाइज किया जा सकता था, आप लोग ब्लाइंडली एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते थे. सो डोंट यू थिंक निशान के लिए वो काफी लेट हो गया था? से सॉरी.
better late than never, I guess, because मतलब वो गेम खेल रहा था 100%. मैं नहीं खेल सकता था वैसा गेम. मैं नहीं किसी को दुखा सकता था या मैं किसी पे इल्जाम लगा सकता था. टू ईच इज ओन, आई फील इन लाइफ. बट अभी निशान मुझे पता था कि पहले दिन से गेम खेल रहा है और मैंने उसको कहा भी था कि तू खेल ले अपना गेम, बिकॉज अपनी जो भी दोस्त है वो बाहर है, वो देखेंगे बाहर क्या होता है. बट I'm sure he realized it, and I'm sure that he realizes that he's only playing the game and not taking our friendship in that way. And I'm glad that he played and he was in the top two, and he deserves it. Deserves it because he really worked hard on it. So जो जिसकी capacity है उसको करना चाहिए और he should get the reward from it. So I think he has got the reward. So I'm okay with that. I'm glad he realized it also and he said sorry. And I also say sorry to him because sometimes I couldn't stand by him, and because the game made us do a lot of things which were unforeseen completely. And what about Pratik? Means like because उन्होंने एक ऐसा टर्म, एक ऐसा वर्ड यूज किया था आपके लिए, स्पाइनलेस, जिससे आप काफी हर्ट हुए थे. एंड उसके बाद लेयर्स पे लेयर्स कुछ ना कुछ होता गया. एंड क्या आप प्रतीक को माफ कर पाए हो? थिंग्स आर फाइन बिटवीन यू बोथ? See, Pratik and I had always had a different equation altogether throughout the show. Probably in real life, I'd never understood him on the show, honestly speaking. कि जो game खेल रहा था हमेशा जो talking in higher tone of voice, and his pitch was always loud, and मुद्दा कुछ सामने कुछ अलग ही आता था उसकी बातों से. वो गेम खेला था, but generally when I got to know him as a person towards the end, I think he's a good person at the end of it. There are two aspects of him clearly, and I respect both. That's why I don't have anything against anybody because everybody was here to play the game, apparently, and I eventually understood that. And now it's water under the bridge, so I don't have anything about anybody as such. कि आज भी अगर कोई किसी का फोन आया, किसी को मैंने फोन किया, तो obviously I'm going to interact with them with them on a very human level, and not like what you did to me on the show or what happened on that platform. I think connection जो होते हैं वो real connection होते हैं, वो real life में ही बनते हैं. और अगर किसी को मुझसे बात करी तो I'm always open, my doors are always open. And Rakesh also, बहुत लोगों ने अंदर आके ये भी बोला था, कनेक्शंस को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया था. मतलब बिग बॉस से सीधा स्प्लिट्सविला बन चुका था ये शो. Nobody was ready to leave their partner, and everybody just want to be with them. जब बिग बॉस ने घर में बजर भेजा तो इट मीन्स शो भी चाहता है तो एक डायनेमिक्स चेंज हो, कोई बजर बजाए, कुछ अलग हो, ऑडियंस के लिए भी कुछ नया होता, नए कनेक्शंस देखने को मिलता. किसी ने भी बजर नहीं प्रेस किया. इनफैक्ट फैमिली डे पे आपकी फैमिली मेंबर से आई थी, उन्होंने भी यही बोला कि आप दिव्या और आपके साथ, जब आप दिव्या के साथ बैठते हो, एक अलग ही राकेश नजर आते हैं, कुछ अलग इक्वेशन नजर आती है. सो दिमाग में कभी आया था टू हिट द बजर? दिमाग पहली बार जब आया था, आई थिंक यू सॉ द शो दैट आई वेंट टू दिव्या एंड सेड क्या जब हमारी फ्रेंडशिप बहुत मतलब बिगनिंग में थी, तब मैंने कहा भी था, तो दिव्या ने कहा भी था कि बस मेरे से बात कर लो, बिकॉज कनेक्शन समिता के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट था इन द बिगनिंग. बट लेटर जब एक बार वी struck the chord, there was no two ways about it. Yeah, I wanted to continue my journey with her. And अगर मैं quit करता तो see, quitting is very easy in life, but to stand by each other and to fight it out is what I wanted to learn. इसलिए मैं उस शो में गया था कि मैं escape ना करूँ कोई situation. तो इसीलिए I went ahead with the same connection, and eventually I know Shamita is a very clear-headed, a strong, opinionated girl, and she's a fabulous human being, and I realized that her soul inside was so pure. So my heart didn't tell me to break the connection at all, and I'm happy that I stuck to that decision, honestly speaking. और seriously, obviously लेना ही था, because it was जैसे कि कहा कि हमें स्प्लिट्सविला लगा ये, हमें कोई आइडिया नहीं थी कि ये कपल टाइप का शो होगा, पर हमें बोला भी गया था कि अगर आप कपल नहीं होगे, आपका कपल ट्यूनिंग नहीं बनेगी तो आप आउट हो जाओगे. तो ऑब्वियसली वो प्रेशर भी था बिग बॉस के यहाँ से कि हमें वर्कआउट करनी है चीजें. पर इवेंचुअली वो प्रेशर होते होते रियल चीजें हो गई, एक कनेक्शन बन ही गया अपने आप. और सो आई मीन आई डोंट थिंक वो चेंज करना कुछ मेरे लिए था इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई वाज हैप्पी इन दिस कनेक्शन.
और I हम्म, wanted to face it. I wanted to जो भी problems थे मुझे head on face करने थे और मुझे escape नहीं करना था उसमें से, और जो भी मैं कर सकता हम्म। था वो मैं कर रहा था, और good or bad or whatever audience felt, but I tried my level best on stage. एंड दिव्या इज द विनर ऑफ दिस शो। तो कितने खुश थे आप जब दिव्या का नाम अनाउंस हुआ, एंड कितना शॉकिंग था आपके लिए जब शमिता एविक्ट हुई? See, Shamita and me both were actually not playing the game, honestly speaking. We were playing the game, but we are not playing the game by not being real, probably. Sometimes you need to be a ruthless person to probably win a show. To understand, okay, fine, this is my goal, and I have to travel to this goal, whichever way. So तुम एक तरीके अप्लाई करते हो, वो गलत होते हैं, सही होते हैं, हर एक का एक पर्सपेक्टिव होता है। प्रॉब्ली हम थोड़े से वीक पड़े उसमें वो गेम खेलने में। हमें कुछ बातें समझ में आ रही थी, पर हमें उस डायरेक्शन में जाना नहीं था। So probably I knew somewhere in my heart that probably coming in the top 5 also was a big thing for me. मुझे लगा नहीं था कि मैं top 5 में भी आऊँगा। But it was as fate and destiny or audience support or whatever it happened, however it was, we both landed up in the top 5. And probably Divya and Nishant, they already knew how the game works, how to play it along. And hats off to them, how they played the game without um taking things too seriously to their heart. Maybe we are more of heart people. Levels of the heart differs here on the show. I think जिसका level ऊपर नीचे होगा वो कुछ rounds cross करता है या नहीं करता है. How people take the show emotionally and how it affects them is also depends on how they progress the show. तो हम थोड़े शायद affect होते थे, जो quite evident था. तो आई एम हैप्पी इनफैक्ट कि हम 5 तक पहुंचे, और जो भी जीते अपनी राइटफुली दे आर द विनर्स। आई मीन ऑब्वियसली ऑडियंस ने उनको जिताया, तो तो सच ही होगा, अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली बिकॉज़ दे आर गुड, दे आर वर्थ इट, दैट्स व्हाई दे वन। सो ये तरह जो जहां तक हम पहुंचे वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मुझे समय पता था कि शमित और मैं एक गेम खेल रहे थे जो हम रियल तरीके से एक मे बी हमारा एजेंडा नहीं था कि हम जाके ट्रॉफी जीते, बट एटलीस्ट वी वांटेड टू विन पीपल्स हार्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। सो एंड बट दैट्स व्हाट आई वाज हैप्पी अबाउट। एंड ऑल्सो व्हेन दिव्या जब घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी, दिव्या इज ऑलवेज सपोर्टेड उनकी जो 2-3 फ्रेंड्स थे, प्रतीक, यू, निशांत एंड मूव्स। मीन्स आपको उन्होंने हमेशा कंसिडर किया ही था, आप तीनों को। वेन जब दिव्या के लिए कभी भी कोई स्टैंड लेना होता था या उसको कोई फेवर चाहिए, तो आप तीनों कभी मतलब वी हैव नेवर सीन यू गाइस टेकिंग एनी स्टैंड फॉर हर। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? Because obviously Divya was playing a game, and I could realize that she was playing a game, and not every time I would support her, because I know that there was certain things that I will not support if she's wrong, and she was wrong at a lot of times. But I, being as a friend, I knew that Nishant और दिव्या दोनों का मैं यही कहना चाहता हूँ, they played a game, and that doesn't mean that I have to take them, मैं सूली पे नहीं चढ़ाऊंगा उनको बिकॉज वो गेम खेल रहे हैं या कुछ नेगेटिव बातें हो रही है या पिचिंग कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। मुझे पता है वो गेम खेल रहे हैं और मैं ऑब्वियसली रिएक्ट करता हूँ। मुझे उस टाइम पे मैं सपोर्ट नहीं करूंगा उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गलत है और मैं गलत लोगों को, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो, मैं सपोर्ट नहीं करता। तो ऑब्वियसली मुझे लगा था दिव्या कहीं कहीं रॉन्ग जा रही है, वो गेम खेल रही है और मेरे हिसाब से वो गलत था। प्रॉब्ली लोगों के हिसाब से वो सही था गेम के हिसाब से, पर दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट सपोर्ट हर व्हेन such times were arise. So किस-किस के टच में हैं आप शो के बाद? मैं सबके टच में, I mean, I've spoken to a lot of people. Obviously Shamita, Neha, Nishant, Divya. Yeah, I think these are the people who are, I think the top 4 जो थे, we have always been, मतलब Neha included, so we have always been close to each other. So I think that will continue ahead. We'll be waiting for the reunion pictures and videos on Instagram. So lastly, anything you like to say to the fans, to the viewers? Oh, they've been really kind. मुझे नहीं लगा था कि honestly जो भी कर पाऊंगा मैं, but without their support I would have really not been able to even come in the top 5. But yes, I did
disappoint you where this show was concerned. But otherwise, if you meet me in person, you will be really happy to meet me. And I'm looking forward to the journey beyond this. And whatever it is, you have told me, you have said a lot of negative things about me before, and like my decisions and being spineless and whatever it is. But let me tell you, I'm full of spine. You just have to come and meet me on a different platform, different level. I'm not what I am, what you see me as probably. I tried to be myself on the show, but probably some people did like that. And I'm sorry I disappointed them. But I'm happy that I learned a lot. Your comments, whatever the negative comments or whatever the trolling happened, it only taught me, and I appreciate that. Everybody has an opinion, and yes, I'm very happy that things turned around towards the end of the show, and I'm very happy the kind of comments that I've been getting, I've been reading. I'm overwhelmed, and I love you for that, and thank you so much for the eternal support, and I'm always going to cherish that. And God bless you guys. I love you. Thank you so much for talking to us. Thank you, and I wish you all the luck. Thank you. Thank you so much. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.